बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6। वेलकम to online class. Hopefully you will be fine and safe at home and you are taking interest in studies. It's our week 2. In social studies we will study chapter number 2, weather and climate, and we will study its page number 10 and 11. Today we will cover these three topics: rainfall, air pressure or weight, and direction of the wind. So let's move towards page number 10. Now open page number 10. The heading is and the topic is rainfall. Rainfall is very important in determining the climate of a place. किसी भी जगह का क्लाइमेट डिटरमिन करने के लिए रेनफॉल बहुत अहम है. द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 1000 and 2000 millimeter a year, as rain is measured in millimeters. Though there are great differences, अगरचे बहुत से मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ differences हैं. Places in the Atacama Desert on the western coast of Chile have had no measurable rain for hundreds of years. Atacama Desert जो वेस्टर्न कोस्ट चिली जो कंट्री है उसके वेस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पर एटाकामा डेजर्ट है. वहाँ पर कई हज़ार सालों से 100 सालों से जो है बारिश रेन जो है वो मेजरेबल नहीं है. एटाकामा इज़ नोन एज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ. एटाकामा ज़मीन पर अर्थ प्लैनेट पर सबसे खुश्क हिस्सा तस्वुर किया जाता है. ऑन द अदर हैंड, Cherrapunji in Assam had 22,990 millimeter of rain in 1 year, 1861. This is still the world record. सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है. Air pressure और weight. Air may not seem to have any weight. बज़ाहिर तो एयर का कोई वज़न नज़र नहीं आता, but it does. लेकिन इसका weight होता है. It is just that we do not normally feel it. ये बिल्कुल ऐसे है कि हम नॉर्मली इसको फील नहीं करते. Above each of us is a column of air several kilometers high. हम सब एक एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट में रहते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर एयर एग्जिस्ट करती है और ये हमारे ऊपर कई किलोमीटर्स तक मौजूद है. Actually this column of air weighs about 230 kilograms. This air pressure or weight is not steady. ये सेम नहीं रहता. Sometimes it presses more heavily on the earth than at other times. बाज़-औक़ात ये ज़्यादा होता है प्रेशर और बाज़-औक़ात ये कम होता है. The average is about 1 kilogram on every square centimeter. When the pressure is high, the air is pushing down on the surface. The weather is usually fine and dry. When the pressure is low, it is usually stormy and wet. Now, direction of wind. The direction from which the winds usually blow also has an effect on climate. If a place mainly has north winds, it is usually cold. जो नॉर्थ की तरफ से हवाएं आती हैं वो अमूमन ठंडी होती हैं, बिकॉज दे ब्लो इन फ्रॉम द आर्कटिक और कोल्डर रीजन्स. इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ साउदर्ली winds which are cool. If the winds blow across a large area of sea, they pick up a large amount of water and produce a rainy climate. If the place faces north in the northern hemisphere, it is usually cool. If it faces south, it is usually warmer.
Places in valleys are often sheltered and have warmer climates. Valleys का जो एटमॉस्फेयर है वो अमूमन वार्मर होता है, गर्म होता है क्लाइमेट वहाँ का. So we have complete this chapter today. You will have to do its objective, short question answers and long question answers at your notebooks by margin, and neat and clean. Okay. Today chapter number 2, weather and climate, we have completed. Thank you.